Dear students, in this video on current electricity, we will discuss numerical problems based on drift velocity, Ohm's law and combination of resistances. So let us begin with the first problem. This problem is based on drift velocity. So let's see. Here is the problem. When 5-volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 raised to the power minus 4 meter per second. Calculate the resistivity of the material if the electron density in the wire is 8 into 10 raised to the power 28 per cubic meter. Right? So first we will write whatever are given to us. See, any numerical you must start with the information which is given and then check what is asked. So potential difference is given to be 5 volt, length is given to be 0.1 meter, drift velocity is this much, number density of electrons is given. You have to calculate the resistivity, right? So let us look for the formulae which connect all these items. So for drift velocity we know this, I is equal to NEAVD, and from here this area A is equal to I upon NEVD. See, then for resistivity we have this relation R into A upon L. Now resistance R, Ohm's law, V upon L, right? So in place of R we place V upon L. Area A we have just found out, that is I upon NEVD. So in place of area we have placed this, and upon L is already there, right? Now trying to simplify it, this I and this I cancelled out, right? So we are left with V upon NEVD, L, right? So now after cancelling all that, see this is cancelled, we are left with V, which is 5 volt, and NEVDL. So N is number density of electrons, 8 into 10 to the power 28. E is charge on electron, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Vd is 2.5 into 10 raised to the power minus 4 meter per second. And length L of conductor is 0.1 meter. So simplifying all this, we reach at this relation. Rho is equal to 1.56 into 10 raised to the power minus 5 ohm meter. Just notice the SI unit. So next one is, it is based on effect of temperature on resistance and resistivity, right? So this is problem number 3.5 from NCERT book. At room temperature, that is 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. Now what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistors is 1.7 into 10 raised to the power minus 4 per degree Celsius. So first you write everything which is given to you. Okay, see. So at initial temperature 27 degrees Celsius, the resistance is given to be 100 ohm, and later on heating, resistance is becoming 117 ohm. The temperature coefficient is given to be this much, 1.7 into 10 raised to the power minus 4 per degree Celsius. You have to find out the final temperature. See, look at the question. What is the temperature? So final temperature you have to find out. Now you know this relation. R is equal to R naught into 1 plus alpha delta T, where R naught is initial value of resistance, right? So now from this relation only, keep this delta T on the left hand side and take all other things on the right hand side. You will get R minus R naught upon R naught into alpha, right? And putting the values, R is 117, R naught is
100. See, final resistance minus initial resistance upon initial resistance 100 into value of alpha, which is 1.7 into 10 raised to the power minus 4. Now simplifying it, the numerator becomes 17. डिनोमिनेटर में आप देखो 10 रेज टू द पावर माइनस 4 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, तो दिस विल गिव यू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, 1.7 एज इट इज, और 1.7 से अगर 17 को आप डिवाइड करेंगे यू गेट 10, राइट, एंड ये माइनस 10 रेज बाय माइनस 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर विल बिकम पॉजिटिव 10 रेज टू द पावर 2 एंड नाउ द प्रोडक्ट इज 1000. ठीक है. So now we have got this delta T, which is final temperature minus initial temperature, is equal to 1000. And initial temperature is known to us. So the final temperature T is, इस minus T को right side में ले जाओ, plus हो जाएगा. So 1000 plus 27, that is 1027 degree Celsius. Okay. So you can get similar problem to find out resistivity also. Okay, now here comes the combination. Calculate the resistance between points A and B. Okay, so points A and B are here. So it's very important to understand the positions of the points between which you have to find out equivalent resistance. First thing, सर्किट को देख के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना आपको सीखना है. वेरी इजी. आप एक पॉइंट से शुरू होके सारे रेजिस्टेंसेस जोड़ते चले जाइए एंड सी व्हाट यू गेट. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ओके, सो हियर व्हाट यू हैव डन इट, एक साइड से हम रेजिस्टेंस खोल देंगे. सी, पॉइंट ए था, मैंने आई हैव ओपन द पॉइंट ए टू दिस प्लेस. पॉइंट ए के साथ है R1 विच इज 5 ओम. देन इसी के आप देखो सीरीज में है R2. यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू किया, करंट में कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, करंट नहीं चेंज हो रही है, सेम करंट पास हो रही है, तो R2 इज ऑल्सो इन सीरीज. सो 3 ओम सीरीज में आ गया. अब आप यहाँ से यहाँ जैसे भी पहुँचेंगे, यहाँ पे करंट आपकी दो जगह बटेगी, इधर और इधर. सो दिस बिकम्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन नाउ. So you get a parallel combination of parallel combination of 6 ohm and this 12 ohm, and वहाँ से आप घूम कर आ जाएंगे, you will reach the point B. So equivalent circuit बनाने के लिए आप एक पॉइंट से शुरू होके एक लाइन में आप उनको कनेक्ट करना शुरू कर दें तो आप बड़ी आसानी से equivalent circuit बना लेंगे. So from here it's clear that these two are in parallel और इसके साथ साथ ये दोनों सीरीज में है. ठीक है. So now we are going to find out the equivalent resistance calculation now. See from the circuit it is clear that R3 and R4 are in parallel. So their resultant, let it be say R5, is given by 1 upon R5 is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 4, that is 1 upon 6 plus 1 upon 12, taking LCM 12, say 6, this is 1 upon 6, 6 2s are 12, 12 1s are 12, 2 plus 1 you get 3 upon 12, so cancel कर लीजिए, 3 4s are 12, you get 1 upon 4, so reciprocal ले लिया, R5 is 4 ohm. So now you can see that this parallel combination becomes 4 ohm, right? So now we have 5 ohm, 3 ohm and 4 ohm in series, right? So now you can see that R5, R1, R2 are in series. So the equivalent resistance is R is equal to their direct sum 4 plus 5 plus 3, that is 12 ohm. Okay? So that's a very simple problem. You have to learn to make equivalent circuits. Now look at this one. Now this circuit does not look as simple. See, point A is here. You have R1 4 ohm, R2 6 ohm and R3 12 ohm and this point B.
Now you cannot make out whether it is a series resistance like 4, 6, 12, they seem to be in one line, but then कुछ parallel type भी ऐसे कुछ कर रखा है. So how to find out the equivalent resistance? Now see, this point is directly connected to this point. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम घुमा के हम सीधे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बीच में केवल कनेक्टिंग वायर लगा है, देयर इज नो रेजिस्टेंस. Similarly, this point and this point, they are directly connected here. तो आप अगर सोचें ज़रा सा, just think it, कि इस point D को मैं उठा के यहाँ पे ला सकती हूँ, राइट? C अपनी जगह रहेगा, तो इसका मतलब कि मेरा जो है 6 ओम ऐसे आ जाएगा, ठीक, और पॉइंट D मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और पॉइंट C तो यहाँ पर एज इट इज़ है ही, ठीक है. एंड व्हाट आई कैन डू इज़ कि इस पॉइंट, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी उठा के हम यहाँ ला सकते हैं. सो अब मेरा जो R3 है वो यहाँ से C से शुरू होके 12 ओम इधर की तरफ आ जाएगा. सो आई गेट 6 भी घूम के आ गया, 4 भी पहले से ही है, और 12 भी घूम कर आ गया. दैट मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज रेसिस्टेंसेज आर इन पैरेलल. सो लेट्स सी हाउ वी make the equivalent circuit. See, so point A, from point A we have resistance 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm in parallel, and this is point B. And एक बार आपको equivalent circuit बनाना समझ में आ गया तो solution is not a problem at all. See, R1, R2, R3 are in parallel, so their resultant is given by 1 upon R is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 6 plus 1 upon 12. Take LCM as 12, and then the numerator, and it is going to be 6 upon 12 or 1 upon 2, and the equivalent resistance becomes 2 ohm. Okay, so you have to learn to draw equivalent circuit. That is the most important point. Now here comes another problem like this only. Let us look at this first. See, you have to find out equivalent resistance between point A and B. Now point A is here, B is here, right? So what we can do is, इस A को अगर stretch करके हम बाहर यहाँ पर लेकर आ जाएं, ठीक है, तो A के साथ वाला resistance ये point भी खींच के बाहर आ जाएगा, right? So I'll get one resistance here, ये वाला R यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट बाहर आ गया. इसका मतलब कि यहाँ से मुझे 3 रेसिस्टेंस मिल जाएंगे, 1 R, 2 R, 3 R. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट, सी, पॉइंट B के लिए, फॉर पॉइंट B, दिस इज कनेक्टिंग वायर ओनली, so I can easily transfer it to this point. This is connecting wire only, so these two can be connected directly to each other. ये भी कनेक्टिंग वायर है तो ये डायरेक्टली एक साथ कनेक्टेड है, यानी कि इस पॉइंट पर ये तीनों रेसिस्टेंस R R R एक साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ ही इस पॉइंट पर भी ये तीनों के तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है. और चौथा पॉइंट जो है A, वो इनके साथ सीरीज में लगा हुआ है इस तरीके से. सी, so what we get is these three are connected in parallel and this R is in series. Okay, so just try to simplify the given circuit. That is very important. So now simplifying it, what we get, see, A into A and the R series में, and this R in parallel, and then point B. And then what we do is we'll find out resultant of this one. और R तीनों equal हैं, parallel में हैं, their resultant is going to be R by 3, और series वाला R जोड़ दीजिए तो plus R, and you will get 4R by 3. So let us look at the solution also. Yeah. See, R in parallel, so the resultant R dash is 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R, 3 upon R. So R dash is R upon 3, and
Now R dash are in series, so equivalent will be R plus R by 3 and 4R by 3. Okay. So sometimes the equations look complicated, but if you look them carefully, you will find them not to be that difficult. Okay. So this is an NCERT problem only and board ka bhi hai. So given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get maximum and minimum effective resistances, and what is the ratio of maximum to minimum resistances? So you know that कि maximum resistance मिलता है series में, minimum मिलता है parallel में, and we have n resistances. So n resistances को आप series में जोड़ेंगे तो R plus R plus R plus R plus R up to n times you'll get nR. ठीक है, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो you'll get n upon R upon n. See, so maximum effective resistance is obtained in series combination as RS is nR, क्योंकि R को आपने n बार जोड़ दिया. Minimum effective resistance is obtained in parallel combination. So RP is R upon n. ठीक है, तो सी अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप दो इक्वल रेसिस्टेंस जोड़ते हैं तो इट बिकम्स R by 2. 3 जोड़ेंगे बिकम्स R by 3. n जोड़ेंगे इट विल बिकम R by n. ठीक है, नाउ व्हाट इज आस्किंग इज दे वांट द रेशियो. तो सम इन सीरीज अपॉन सम इन पैरेलल, nr upon n, and this r and r cancelled out, you get n square. So that is the answer for the first part. Now comes the second part. So let us read the second part now. This is a very good question. See, given the resistances 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, how will you combine them to get an equivalent resistance of 11 upon 3 ohm, second part 11 upon 5 ohm, third is 6 ohm and fourth is 6 upon 11 ohm. Now you have three resistances और उनके ऐसे combinations बनाने हैं जिससे कि हमें ये वाले resistances मिले. तो पहले आपको यही समझना है कि इनको हम करेंगे कैसे. So let me start with the first one. See, I have drawn this. First one is 11 upon 3, right? So for that, what I have done is I have connected 1 ohm and 2 ohm in parallel, and the third one is going to be in series. Now why I chose 1 and 3 only? You know that in this parallel combination, the resultant is 1 upon R is say 1 upon 1 plus 1 upon 2, right? If you take LCM and take reciprocal, the resultant of two parallel combinations is always R1 R2 upon R1 plus R2. आप LCM लीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, आपको यही मिलेगा. रिजल्टेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. अब मैंने यहाँ क्या देखा कि कौन से दो रेसिस्टेंस हैं जिनका की सम 3 आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 3 चाहिए. ठीक है, सो आई चोज 1 एंड 2. यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग. सो 1 एंड 2 को हमने ले लिया पैरेलल में, एंड जो बचा हुआ है वो चला गया सीरीज में. ठीक है, the second one is C 11 upon 5. Second one is this 11 upon 5. Now I'll take those two resistances whose sum is 5 in parallel. So 2 and 3 are 2 plus 3 is 5. So I'll take 2 and 3 in parallel and then 1 in series. Right? So let's see what we do now. The next one, you see. 2 and 3 in parallel and 1 in series. And then the third one is 6 ohm
and the maximum possible value, their sum is 1 plus 2 plus 3 is 6. So maximum possible value के लिए obviously they are connected in series 1, 2 and 3, and the last one is the minimum possible value. How much? 6 upon 11, right? So 6 upon 11, it is the minimum possible value. So all three are connected in parallel now. So let us take their solutions also. See, one by one. So in the first case, I took 1 and 2 in parallel. So resultant is, as I just told you, resultant for parallel is R1 R2 upon R1 plus R2, और जो सीरीज में होगा वो अपने आप ही जुड़ जाएगा R3. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन 1 and 2 in parallel. So 1 into 2 upon 1 plus 2 plus सीरीज वाला 3 आ गया. So what do you get? 2 upon 3 plus 3. Take 3 as LCM. You'll get 2 plus 3 3 the 9 and that is 11 upon 3. ठीक है, तो आप अलग अलग स्टेप में करते, फिर रेसिप्रोकल करते, फिर सम करते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. यू हैव टू लर्न टू सिंप्लीफाई थिंग्स. आप आसान बनाना सीखिए काम को. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. हियर आई हैव टेकन 2 and 3 in parallel. So here R is 2 into 3 R1 R2 upon 2 plus 3 plus 1 सीरीज में है, सीरीज में आ गया. So 2 3 is 6 upon 2 plus 3 5. So this becomes 6 upon 5 plus 1 and 5 is LCM. So you get 6 plus 5 and the 5, 6 plus 5 11 upon 5 ohm directly. यहाँ देखो हमने एडिशन रेसिप्रोकल वो सारा नहीं किया है, डायरेक्टली इसको कर दिया है. फॉर द थर्ड केस they are in series, so 1 plus 2 plus 3 is 6 ohm directly. And for the last case, see here, when the sum is minimum, 1 2 3 they are connected in parallel. So 1 upon R is 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3. Their LCM is 6. And then what do you get? 1 6 is 6, 1 6 is 6 plus 2 3 is 6 plus 3 2 is 6 in the numerator, and 6 plus 3 plus 2 कितना हो जाएगा आपका 11 upon 6. and taking reciprocal you get R is equal to 6 upon 11 ohm. जो हमने रिलेशन बताया वो केवल R1 R2 upon R1 plus R2 जो है वो एप्लीकेबल है केवल 2 रेसिस्टेंसेस के लिए. 3 रेसिस्टेंस में डायरेक्टली आप नहीं यूज कर पाएंगे. So I hope you understand. This is a very good question. Next comes a question. Another very good question. Just try to understand it. A wire is stretched to n times its original length. What happens to its resistance? एक वायर है आपके पास ऑलरेडी, ये सपोजिंग यू हैव दिस वायर, और इसी वायर को स्ट्रेच करके हमने लंबा कर दिया है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मटेरियल बदला है, मटेरियल हमारे पास उतना ही है, उसको हमने किसी तरह से खींच के लंबा कर दिया है. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टोटल मटेरियल हमारे पास उतना ही है. सो वॉल्यूम जो है वायर का इनिशियली और फाइनली बराबर होना चाहिए. ठीक है, एंड यू नो दैट वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. सिलेंडर है ये. सो वॉल्यूम पहले वाले वायर का A1 L1, दूसरे वाले का स्ट्रेच करने के बाद A2 L2 इक्वल कर दिया हमने. नाउ L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1. वायर इज, ये क्या क्वेश्चन क्या है, वायर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. दैट मीन्स L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1. ठीक है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया. ठीक है, सो नाउ A2 जो नया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, you'll get A1 L1 upon L2. यहाँ से L2 डिवाइड कर दीजिए
और A1 अपॉन N L1 की वैल्यू हमने डाल दी और आई गेट A1 अपॉन N. दैट मीन्स कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स. जब लेंथ हो गई n टाइम्स तो एरिया हो गया 1 अपॉन n टाइम्स. ठीक है. एंड नाउ इनिशियल रेसिस्टेंस R1 इज रो L1 अपॉन A1. रेसिस्टिविटी, हमको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है पता इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, और वायर वही है तो रेसिस्टिविटी तो नहीं बदलेगी. सो R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2. राइट. और अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड R2 बाई R1, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमने L2 और A2 की वैल्यू पहले डालनी पड़ेगी. नाउ जस्ट लुक एट इट. L2 is in place of L2 I have placed n L1. In place of A2 I have placed A1 upon n. और from here this n will go up, n चला जाएगा ऊपर और you will get n square row L1 A1. Now this row L1 upon A1 from this equation is equal to R1. So इसकी जगह पे हमने लिख दिया R1. So R2 is n square R1. That means resistance becomes n square times. Resistance जो है, अगर हमने वायर को स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया है तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. इफ वी हैव अ वायर लाइक दिस और इसको हमने लंबा करके उसकी लंबाई डबल कर दी तो उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. अंडरस्टैंड. अगर हमने इसकी लंबाई 3 टाइम्स कर दी तो रेसिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम्स. सो यू मस्ट रिमेंबर इट. आपके पास डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और डेरिवेशन भी आ सकती है. सो लेट अस लुक एट दिस वन. पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझें. द क्वेश्चन इज calculate the current passing through each resistance. So let us look at the resistances first. See, we have 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 9 ohm, 6 ohm. ठीक है. And this is connected to a 10 volt battery. So current starts from here. यहाँ पे करंट जाएगी, कोई भी करंट I ले ली हमने. ठीक है. अब यहाँ से करंट एक तरफ इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी. ठीक है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया. जैसे ही करंट हमारी डिवाइड होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया. बट व्हाट यू सी इज कि एट दिस पॉइंट जो करंट यहाँ पर है ये यहाँ से घूम के वही करंट यहाँ आ रही है. दैट मीन्स 2 ohm एंड 4 ohm आर इन सीरीज. सिमिलरली जो करंट यहाँ घुसी 3 ohm में, यहाँ पे घूम के वही करंट 9 ohm में जा रही है. तो 3 ohm और 9 ohm सीरीज में है क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं बढ़ रही है. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बढ़ती है. बट यहाँ पर आके अब देखो दोनों करंट्स मिलके फिर पुरानी करंट आ जाएगी और 6 ohm में वही वाली करंट आएगी. तो सेल से जो करंट निकली वही करंट वापस आके 6 ohm में घुस रही है. तो दैट मीन्स 6 ohm इज इन सीरीज. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस I एंड दिस I. हमें ये वाली करंट भी निकालनी है, ये करंट निकालनी है और ये करंट निकालनी है. Right. Okay. So let us look at the equivalent circuit here now. See what happened here. The cell is as it is. यहाँ से करंट निकली है I. इस पॉइंट पर आकर it is divided in 2 parts. I1 goes through 2 ohm and 4 ohm resistance. ठीक है. I2 goes through 3 ohm and 9 ohm resistance. इस जगह पर आकर ये I1 I2 दोनों मिलके फिर से I बन जाती है. It passes through 6 ohm resistance और यहाँ से लौट के वापस आके वो सेल में मिल जाती है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. और उसके लिए पहले इस पैरेलल रेसिस्टेंस को हमें कॉम्बिनेशन को निकालना पड़ेगा, फिर उसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और तब हम जाके करंट निकालेंगे जो कि सेल से ड्रॉ हो रही है, विच विल बी करंट I. सो लेट अस लुक एट दिस वन नाउ.
आई होप द प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर टू यू. इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपको और इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर होना चाहिए. सो यू कैन सी दैट 2 ohm and 4 ohm आर इन सीरीज, पैरेलल में ऊपर वाली लाइन. सो R1 इज 2 + 4 6 ohm. पैरेलल की दूसरी लाइन में 3 ohm and 9 ohm आर इन सीरीज. सो R2 इज 3 + 9 12. ठीक है. अब ये वाला R1 और ये वाला R2 पैरेलल की ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन वो पैरेलल में है. एंड इफ दे आर इन पैरेलल देन अब मुझे उनका रिजल्टेंट चाहिए. सो लेट अस टेक इट एज R3. सो 1/R3 इज 1/R1 + 1/R2. दैट इज 1/6 ohm + 1/12 ohm. And it is going to be 3/12 or 1/4. So resultant of parallel combination R3 is 4 ohm. Right? यहाँ पर हमने 4 ohm ऐसे निकाला है लंबा प्रोसेस लेके. You could have used the same relation which I just told you, that R is R1 R2 upon R1 plus R2. अब हमारे पास था ये कितना 4 and 6 is it? तो 6 into 4 upon 6 plus 4. Right? And from here what do you get? 6 into 4 24 upon 12. Was it? No, 6 into 12. Oh, sorry. It was 6 and 12. Okay. So R was 6 into 12 upon 6 plus 12. Right. So simplifying it, 12 6 are 72 divided by 6 plus 12, that is 18, and 18 4s are 72, and we have got this relation as 72. ठीक है. सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप इसके किए बिना भी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं. द वर्क गेट्स ईजियर नाउ. सो नाउ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ गया 4 ohm and 6 ohm is in series. as you can see, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 4 ohm और साथ में आ गया सीरीज में 6 ohm. So this 4 plus 6 will give you 10 ohm and it is connected to 10 volt battery. Right? So now equivalent resistance in circuit becomes 10 ohm, as I just said, and okay. So now current drawn from the cell I is equal to V upon R, that is 10 volt upon 10 ohm, and that is 1 ampere. That means 1 ampere current is drawn from the cell. Now we will find out, and this 1 ampere will pass through 6 ohm क्योंकि वो सीरीज में है. तो 6 ohm के साथ तो यही वाली करंट पास हो रही है. Now we want to find out potential difference across the parallel combination. Right? So the parallel combination का potential difference V1 will be equal to I into R3, जो हमने parallel combination का resistance निकाला है, which was 4 ohm. So 1 into 4 is going to be 4 volt. ठीक है. Now potential difference across 6 ohm will be equal to, again V is equal to IR, so 1 into 6, that is 6 volt. और देखो दोनों का सम 10 वोल्ट पूरा हो गया. ना अब हमें क्या चाहिए? I want to find out I1 current. I want to find out current through 2 ohm and 4 ohm arm. जो हमारी ऊपर वाली जो आर्म थी उसमें उसकी करंट मुझे निकालनी है. राइट. लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड नाउ. I want to find out this I1, और जब अभी हमने निकाला कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, just by calculating it. Right? So this I1 will be equal to this 4 volt divided by this total resistance 2 plus 4, that is 6. So 4 volt upon 6 ohm. ठीक है. Similarly this I2 will be equal to this 4 volt upon 3 plus 9 12 ohm.
तो हम I1 और I2 दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि ये जो टोटल करंट है वो I1 और I2 के सम के बराबर होगी। लेट्स सी व्हाट वी गेट इट। So first we'll find out current through arm containing 2 and 4 ohm, then current through arm containing 3 and 9 ohm. So you can see. So current through arm containing 2 ohm and 4 ohm will be V1, that is 4 volt, upon R1, that is 6, or that is simplify 2 upon 3 ampere. Now current through 3 ohm and 9 ohm arm will be equal to V1 upon R2. क्योंकि potential difference तो same ही है, so 4 upon 12, that is 3 plus 9 का 12 आ गया, 1 upon 3, right? And now if you look at it, I1 plus I2, इन दोनों करंट्स का सम कितना आएगा? 2 upon 3 plus 1 upon 3 will give you I is equal to 1 ampere, जो कि हमारी टोटल करंट के बराबर थी। जैसे टोटल करंट के बराबर आ जाएगी। सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ करंट एनीवेयर। और 6 ओम के हमारी जो 6 ओम रेसिस्टेंस था सीरीज वाला, उसमें तो यही वाली करंट पास होने वाली है। ओके, 6 ओम में यही वाली करंट पास होगी। सो see, there are many possibilities. You need to do as many numerical problems as possible, तभी आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। Thank you for watching it.